Hello students, welcome back to Gradify Academy. Today we are going to do a sum which is for 8 marks, practical problem 8 marks and objective is 1 mark, death of partner. Okay, so यहाँ पे है death of partner is much more similar to retirement. Whatever adjustments you have for retirement is mostly similar to death. यानी डेथ के लिए आपको गुडविल के लिए कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं करना, जैसे हमने रिटायरमेंट में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है. ओके, इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है जो न्यू है, वो है द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ सुरेश. सुरेश इज़ द डिजीज्ड पार्टनर. डिजीज पार्टनर का मतलब होता है कि जब पार्टनर डेड हो जाता है तो उसको डिसीज पार्टनर बोलते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे सम में सुरेश डिजीज पार्टनर है. बाकी दो पार्टनर्स जो हैं वो है नरेश एंड परेश. Profit sharing ratio, old ratio is 1:1:1. Okay, now this is the sum. We have to follow the same steps. We have to mark the adjustment for the assets and the liabilities. Assets में दिया है land and building. Suresh, Naresh and Paresh were equal partners. So profit sharing ratio is 1:1:1. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. Assets has land and building 2 lakh, furniture 1,50,000, debtors 1,50,000, cash 1 lakh. Capital of Suresh, Naresh and Paresh are 2,50,000, 1 lakh and 1 lakh respectively. Sundry creditors are 1,50,000. Now यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि जो डिजीज पार्टनर है सुरेश, जो है सुरेश पार्टनर जो डेड हो गया है, उसका डेट ऑफ डेथ क्या है. इट इज़ 30th जून. उसको आप मार्क कर लो ऐसे, 30th जून 2019 एंड ईयर एंडिंग इज 31st मार्च 2019. तो डेथ क्या होता है. डेथ इज़ लाइक अ परमानेंट रिटायरमेंट. जो हमने रिटायरमेंट पहले किया दैट इज़ अ टेम्पररी रिटायरमेंट, राइट. बट डेथ इज़ अ परमानेंट रिटायरमेंट, यानी कि पार्टनर डेड हो गया है और 3 मंथ्स उसने काम किया, दैट इज़ ईयर एंड 31st मार्च तक काम हो गया. देन ही वर्कड इन द न्यू ईयर फॉर अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स. ओके, तो वो 3 मंथ्स जो उसने काम किया है उसका भी प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो डिजीज पार्टनर को मिलना चाहिए. तो इसका ट्रीटमेंट इज समथिंग न्यू जो हमारे रिटायरमेंट में नहीं होता है, डेथ में होता है. तो ये हम इसको वर्कआउट करेंगे. फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 1,70,000. सो यहाँ पर फर्नीचर को आप टिक कर लो. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू डेप्रिसिएटेड बाय 10%. ओके, provide RDD at 5% on debtors. The profit up to the date of death of Suresh is to be calculated on the basis of average profit of last year which was 90,000. Average profit का मतलब होता है आपको 4 years या 5 years का profit दिया होगा, then you have to divide by 5. अगर 5 years का है तो divide by 5 and then into number of years purchase. तो जो भी amount हमको आता है that is हमारा goodwill का amount, तो वैसे ही सेम हम प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ करते हैं. जितने भी ईयर्स का दिया हुआ है, सपोज 3 years का दिया हुआ है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, 3 years के लिए हम डिवाइड बाय 3 करेंगे. एंड देन जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वो है सुरेश शेयर इन प्रॉफिट. क्या करेंगे आप, जो एक्स्ट्रा उसने काम किया है ना, तो उसका कितना प्रॉफिट. सो यू विल राइट सुरेश, ये वर्किंग के लिए मार्क्स है, सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो the formula is equal to profit into period into profit sharing ratio. सुरेश का profit sharing ratio. ओके, तो डेथ में यही एक एडिशनल एडजस्टमेंट होता है ना. प्रॉफिट यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट तो नहीं निकालना है सम में, इट इज़ ऑलरेडी गिवन. The profit up to the date of death of Suresh is to be calculated on the basis of average profit of the last year. एक ही साल का दिया है which was 90,000. So profit is 90,000. Additional period जो उसने काम किया that is 3/12 and profit sharing ratio सुरेश का है 1/3. 1:1:1 is 1/3. तो इसको हम वर्किंग करेंगे. So this comes up to 7,500. Okay. नाउ ये 7,500 के लिए जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट. 7,500 to
सुरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश इज कैपिटल अकाउंट। ओके, इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है वो हम देखते हैं बाद में। नाउ विल स्टार्ट द सम। फर्स्ट जो भी असेट्स एंड लायबिलिटी है उसको अपने जगह पे डाल दीजिए। जिसके लिए एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम एंड जिसके लिए एडजस्टमेंट नहीं है वो आउटर कॉलम। सो लैंड एंड बिल्डिंग, land and building amount is 2 lakh. Okay, then leave 2 lines, then write furniture. Amount of furniture given is 1,50,000. Debtors 1,50,000. Cash, you don't have any adjustment for cash, so cash will be 1 lakh in the outer column. Okay, capital account by opening balance brought down. Suresh is 2,50,000. Naresh capital is 1 lakh and Paresh capital is 1 lakh. Done. Then creditors will go in liabilities. Creditors 1,50,000. Now furniture was to be adjusted to its market price of 1,70,000, which means the new value or the revalued figure of furniture is 1,70,000. Book value is 1,50,000 and the new value is 1,70,000. So what you will do, you will add 20,000, which means furniture is appreciated. Furniture को आपने appreciate करना है 20,000 से. Outer column 1,70,000 and because you are appreciating, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय फर्नीचर जितना भी अमाउंट आपने इंक्रीज किया है वो डालना है 20,000. देन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, सो यू राइट लेस डेप्रिसिएशन. 10% on 2 lakh is land and building depreciation. 10% on 2 lakh is 20,000. So 2 lakh minus 20,000 is 1,80,000. And then second effect for your depreciation, profit and loss adjustment account, debit side to land and building. Land and building amount 20,000. Okay. Then provide RDD 5% on debtors. So you'll write debtors balance sheet asset side less RDD 5%. 1,50,000 is the amount. 5% of 1,50,000 is 7,500. 15,000 is 10% and 5% will be 7,500. Deduct 7,500 from 1,50,000. Balance amount take in the outer column 1,42,500. And then profit and loss adjustment account, you will write debit side to RDD 7,500. Okay, and then the profit up to the date of death of Suresh, that already we have calculated. The amount is 7,500. You have to pass profit and loss suspense account to Suresh account, which means in the capital account you will write by profit and loss suspense account. By profit and loss suspense account, and amount will go in Suresh's capital account, that is 7,500. And second effect for profit and loss suspense account is in the balance sheet asset side. So capital account, deceased partners capital account credit side, and balance sheet asset side. Do not write only profit and loss, write profit and loss suspense account. So it is 7,500. Done. So postings and adjustments sab ho gaye. Close the account. This is 27,500 on the debit side
एंड क्रेडिट में हमारे पास सिर्फ 20,000 है, 27,500 minus 20,000 is 7,500 is revaluation profit, which will go to partner's capital account by partner's capital account. Okay, Suresh, Naresh and Paresh in the ratio of 1:1:1. 1:1:1. So 2,500 each. Transfer this to profit and loss account, capital account, debit side. It's a loss. So to revaluation loss, amount 2,500 each. Okay, now let us close the capital account. 2,50,000 and 7,500 is 2,57,500. 2,57,500 minus 2,500 is 2,55,000. 2,55,000. Okay, now this is the balance in सुरेश अकाउंट. सुरेश तो डिजीज पार्टनर है, तो उनके अकाउंट में जितना भी बैलेंस आएगा ना, नो ही इज़ डेड, तो ये अमाउंट उनके लीगल हेयर मतलब उनके फैमिली, उनकी वाइफ या उनका बेटा जिसको हम बोलते हैं लीगल हेयर, उनको देना है. तो व्हाट डू वी राइट हियर? टू सुरेश's legal heir, and this amount becomes a loan for the remaining partner. उनको सुरेश के रिलेटिव्स को ये पैसा देना है, तो उनके लिए वो लोन हो गया. तो लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे सुरेश लीगल हेयर लोन अकाउंट 2,55,000. ओके, रिमेनिंग टू पार्टनर्स को भी हम क्लोज कर लेते हैं. दिस इज 1 लाख, 1 2 3 4 5 minus 2,500 is 97,500. This will be to balance carried down. Okay, capital Suresh, Naresh and Paresh. Okay, so 97,500. सुरेश तो डिजीज पार्टनर है, यू कैन पुट अ डैश देयर, या तो फिर आप उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. परेश का भी आई गेस सेम ही अमाउंट है, 1 लाख. 1 2 3 4 5 1 lakh minus 2,500 is 97,500. 97,500 2 times is 1,95,000. Add the liability and the assets. So 1,95,000 plus 1,50,000 plus 2,55,000 is 6 lakh. And the asset side is also 6 lakhs. So you can see it is similar to retirement. The only difference is of this adjustment, profit up till the date of death. Okay, and this balance should come in the last line, or Suresh legal heir should be written above. That's it. तो सिंपल है. गुडविल, इसमें गुडविल नहीं था. अगर गुडविल का कोई एडजस्टमेंट आएगा तो आपको सिमिलर जैसे रिटायरमेंट में हम करते हैं, बिल्कुल डेथ में भी वही रहेगा, नो चेंजेस. ओके, होप आपको ये समझ में आ गया हो. आप इजीली 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड 1 मार्क ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्कोर कर सकते हैं. सो और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.